Okay, continue the class. Earlier we have studied about resistance and resistivity. Resistance and resistivity is the property of opposing the flow of charge when current passes through the conductor. And the reciprocal properties are conductance and conductivity. Conductance, it is the measurement of ease of flow of charges through conductor. किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्जेस कितना इजीली फ्लो कर सकते हैं, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस. ऑपोजिशन करने की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, तो इजीली फ्लो होने की प्रॉपर्टी कंडक्टेंस है. एंड ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सो 1 अपॉन ओम is written as mho, mho, or ohm inverse or Simon. Simon. Now, conductivity is represented by symbol sigma, and it is equal to reciprocal of resistivity. Sigma is equal to 1 upon rho. The units of rho, they are ohm inverse, ohm meter, so its reciprocal are ohm inverse, meter inverse, and ohm inverse is known as mho, so mho or per meter. Okay, so these are two reciprocal properties of corresponding to resistance and resistivity. Now we will establish the relation between current density, conductivity, and electric field. The things we have already been studied is that electrons are drifting in a conductor on applying potential difference. The area of cross section of conductor is A, then amount of current I is equal to NEAVD. Parameters are well known to you. N is the free charge density, volume charge density of electron. E is electron A area of cross section of conductor, and Vd is the drift velocity. And expression of for drift velocity is Vd is equal to E upon m into tau. Substitute this value here. NEA is as it is. Value of Vd E upon m into tau. Okay. So what is current density? Current density J is equal to I upon A. I को A से divide कर दें. What you are going to get? N E into E. E square, electric field E, relaxation time T, and mass M. So N E square E tau upon M. So this is the relation for J. But already we know that specific resistance rho is M upon N E square tau. So what is the expression for conductivity? Just its reciprocal. So conductivity is equal to N E square tau upon M. You can see N is there, E square tau upon M is there. So we can put N E square tau upon M as sigma or conductivity. So J is equal to sigma into E. So this is the expression. Or you can divide J with sigma. J को अगर आप sigma से divide करेंगे, N E square tau upon M cancel out. What left? E left. So J is equal to sigma into E. Okay. So this is the relation between current density, conductivity, and electric field. Next is the relation between specific resistance and mobility. Now, I is equal to NEA Vd. And what is mobility? Mobility is Vd upon E. So from this expression, you can say Vd is equal to mu into E. Substitute the value of Vd here. So I is equal to NEA mu E. Now, what is the expression for current density? It is I upon A. If it is I upon A, then I upon A is equal to NE mu E, because A cancel. NE mu E. So this is current density mu. Sorry, current density J. Now, another formula for J is sigma into E, and sigma is 1 upon rho. So you can say it is E by rho also. So substitute the value of J as E by rho. So E by rho is equal to NE mu E. So E to E cancel. So 1 upon rho is equal to NE mu. So you can say
rho is equal to 1 upon n e mu. So specific resistance rho is equal to 1 upon n e and mu. So there is a reciprocal relation between mobility and specific resistance. Now we will study the temperature dependency, effect of temperature on resistance, or the temperature dependency. Okay, so already we have discussed length and area of cross section, that it is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section. But there are two factors who may vary when we change the temperature. The first thing is the relaxation time, and second is free charge density, the number of electrons, free electrons present in the substance. ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों हैं? क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर वेरी लूजली बाउंड and they are completely free from the attraction of nucleus, so they are free to move within the conductor. If temperature is raised, n increase तो होता है, but it remains moreover constant, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो टेम्परेचर को राइज करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे मे कम इन फ्री स्टेट, बट ये जो चेंज है दैट इज वेरी स्मॉल, so n remains moreover constant. It means there is no appreciable change in the charge density. Already free charges की जो density है वो इतनी high होती है that number of electrons increased on supplying temperature, on supplying heat, it is very small. So we can say that there is no remarkable change in charge density n. So n remains constant. तो यहाँ पर n पर कोई effect नहीं पड़ता. But what is the effect on relaxation time? So due to increase in thermal energy of atom or ion, the frequency of collision of electron with atom and an ion during drifting also increases. अभी बताया मैंने कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो एटम्स जो हैं, आयंस हैं, अपनी पोजीशन पर मोर रैपिडली वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है. सो इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स और आयंस के साथ जो कॉलिजन है उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन the average relaxation time tau it decreases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दो कॉलिजन के बीच में टाइम कम मिलेगा. सो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा सो r increases with rise in temperature, r will increase. So we are taking parameter as at temperature T1 resistance is R1, at temperature T2 resistance is R2. So according to concept, change in resistance is R2 minus R1 delta R, change in temperature is T2 minus T1 delta T. So this change in resistance is directly proportional to the initial value of resistance and it is directly proportional to change in resistance. ये initial value पर भी depend करता है और change पर भी depend करता है. Combine these two, so delta R is directly proportional to R1 into delta T. So if I remove this proportionality sign, obviously I am going to get a constant and that constant is alpha. So delta R is equal to alpha R1 delta T. So from this expression we can get alpha, it is delta R upon R1 delta T. Here alpha is called temperature coefficient of resistance. Here if I put value of delta R as R2 minus R1, I can get R2 as R1 1 plus alpha delta T. Okay, so you can see what is the unit for alpha. Alpha is per Kelvin or per degree Celsius. If the temperature is in Celsius, then it will be per degree Celsius, or if temperature is in Kelvin, then it is per Kelvin. Now for metals alpha is positive because there is proportional change, R increases with rise in temperature, and for insulators or semiconductor alpha is negative because R decreases with rise in temperature. Okay, now there are one more category, that is alloy. Alloys की कुछ प्रॉपर्टी होती है. Alloys, their resistivity is high. Temperature coefficient is very small. Temperature coefficient is small, it means temperature coefficient आपको क्या बताएगा कि टेम्परेचर को राइज करने पर डिग्री राइज पर कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज स्मॉल, सो R does not changes appreciably with rise in temperature. मीन्स एलॉयज जो होते हैं
उनकी टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की दैट इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स कोई रिमार्केबल चेंज नहीं होता। देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल, ये मैं और डिस्कस करूंगा। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल, resistance made up of alloy are least affected by atmospheric condition like air और moisture। जैसे आयरन है, एयर और मॉइस्चर में रस्टिंग पॉसिबल है, सो ये केमिकली ज्यादा रिएक्ट नहीं करते विद एटमॉस्फेयर, सो दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर एंड मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। Now resistivity of material rho is equal to m upon n square tau। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े या टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़े, इट इज द सेम थिंग। दोनों में टेम्परेचर का सेम वेरिएशन है। आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो रिमेनिंग आप उसको उसी मैटर में पढ़ सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा है मेटल के यहाँ हम रेजिस्टिविटी स्टडी करेंगे फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ सब मटेरियल्स। सो rho is inversely proportional to n into tau। n is the charge density and tau। Now take the case of metal, already we have studied in detail that n is free charge density, does not changes with rise in temperature। metals में ये बहुत ज्यादा remarkable change नहीं होता, but average relaxation time tau decreases with rise in temperature। ये हमने already बताया, temperature rise करने पर tau decrease कैसे होगा, थर्मल मोशन इंक्रीज होगा, वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। देखिए टॉ डिक्रीज होगा, ये कांस्टेंट है, तो अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो ओपन रो वन डेल्टा टी, ये वही है जो रेजिस्टेंस के केस में फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑल्सो। एंड रो टू इज इक्वल टू रो वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये डेरिवेशन भी उसी प्रोसेस से आता है। यूनिट्स आर ऑल्सो सेम, अल्फा इज इक्वल टू पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है बिकॉज रो इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। सो अगर कॉपर के लिए हम टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टिविटी ग्राफ प्लॉट करें देन इट इज ए कर्व्ड ग्राफ। सो इट इंक्रीजेज इन दिस वे, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है but there is increase, and the order of the change is 10 to the power minus 8 ohm meter। the order of resistivity is 10 to the power minus 8 ohm meter। so this is the variation between resistivity and temperature for copper metal। now if I discuss about alloys, so this is the graph for nichrome and this is the graph for manganese। अगर हम n मोरोवर कांस्टेंट है, एलॉयज में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया दैट एलॉयज का फॉर्मेशन होता है इसी टाइप से दैट टेम्परेचर द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी with rise in temperature it is very small, negligibly small, and you can see in manganese it is moreover constant। so in alloys rho does not appreciably changes with rise in temperature, rho में appreciable change नहीं होता। in nichrome you can see that change in resistivity is very small with rise in temperature। ये जो टेम्परेचर में राइज है नियर अबाउट 800 केल्विन के अराउंड है, यू कैन सी दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ओके, and you can see the resistivity of manganese is moreover independent of rise in temperature, means आप टेम्परेचर को कितना भी राइज करें the resistivity of manganese remains constant। that is why manganese is used for forming standard resistances जहां टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं होता रेजिस्टेंस का। now if we discuss about semiconductors, in semiconductors like germanium and silicon, देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स आर नॉर्मली इंसुलेटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स कम टू फ्री स्टेट, मींस टेम्परेचर को राइज करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज होते हैं। ओके, सो इन सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन चार्ज डेंसिटी n इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, तो n में इंक्रीज होगा, बट ऑन द अदर साइड
रिलैक्सेशन टाइम टॉ डिक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर। अब देखिए एन इंक्रीज होता है एंड टॉ डिक्रीज होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है? इंक्रीज इन एन इज मोर इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने फॉर्मूला देखें, दोनों में वेरिएशन है, एन में जो चेंज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, लेकिन प्रोपोर्शनल चेंज नहीं है, दोनों में सेम मैनर में चेंज नहीं है, अदरवाइज ये कंपनसेट कर देते हैं। द इंक्रीज इन एन इज मोर इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली एन इज मोर इफेक्टिव। तो आप जरा इस फॉर्मूले पर आ जाएं। सी दिस वन, रेडिस्टिविटी, एन में इंक्रीज ज्यादा है देन रेडिस्टिविटी डिक्रीजेस। Hence tau n increases with rise in temperature। ये डिक्रीज होता है ये इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज इज मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू डिक्रीज, सो ऑब्वियसली देयर इज ओवरऑल इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज होगा तो रेडिस्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर राइजेस, दिस इज रेडिस्टिविटी एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। सो एग्जाम में ये ध्यान रखें, दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज ग्राफ फॉर alloys and this is graph for metals। एग्जाम में ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। ओके, so this is all about temperature dependency। That's all for today, have a good day।